Ladies and gentlemen, GCU-ACM Student Chapter would like to welcome you all to our virtual technical talk on the crucial and ever-evolving field of cybersecurity and ethical hacking. My name is Hira Shahid, and I'm honored to be your host for this event. Cybersecurity has become an increasingly critical aspect of modern society as technology becomes more advanced and pervasive. As a result, careers in cybersecurity have become more in demand and varied, with many different paths available to those interested in this field. In this talk, we will explore various careers and paths in cybersecurity, from entry level positions to executive roles. We will also discuss the different skill sets required for different positions, as well as the various certifications and educational paths available. Additionally, we will examine the current state of the cybersecurity industry and explore future trends and challenges that professionals in this field will face. Now, let me introduce our speaker for today's talk, Mr. Jahanzaib Awan. He is currently an information security specialist at Qatar Railways Company. He has worked with big names in the IT industry, previously serving as a cybersecurity operations engineer at Kareem and cybersecurity engineer at Edo AI. Now, without any further ado, let me once again welcome our guest speaker, Mr. Janzeb Awan. Now, please, I request you to begin with your talk, sir. Thank you for joining us. Sorry for this, sir, but your mic is mute. We cannot hear you. Okay, how about now? Yes, we can hear you. Thank you, Okay. sir. Okay, thank you, Ira. Thank you for the brief introduction. So this session is more towards the how you can get into cybersecurity, what is actually cybersecurity, how I get into the cybersecurity. So this will be more of an interactive session instead of a one-sided session. So thank you everyone for joining. As here already told you about that, I have worked currently working in the Qatar Railways as information security specialist. Before that, I worked in the different domains of cybersecurity, like the cybersecurity operations engineer, cybersecurity engineer. You must be like in a little confusion that these are the almost the same domains, but the different naming conventions: cybersecurity engineer, cybersecurity operations engineer, and then the information security specialist. So I'll go through all the details that what is the main difference between them, how they're interrelated, and how you can get into the cybersecurity. So without any further ado, I'm going to share my screen. So if anyone has a question, don't wait for anything. Just talk uh, within the presentation. So I want everyone to participate. This is not like a pet or classical presentation. Make it an interactive so that everyone should be enrolled and have maximum question and answer. So the main topic is the careers in cybersecurity. So this is a brief introduction, Jahanzaib, and I am not, by the way, have a bachelor's in the software engineering or the computer sciencing. I am an electrical engineering from the National University of Sciences and Technology. And here's my email address. Along with the bachelor's in electrical engineering, I'm a certified AC console instructor. Uh, Education doesn't always end at any point. So along with the education, I have certain certifications like I'm a certified ethical hacker, I'm a certified SOC analyst, network defender. I'm from these are the on-prem solutions. So for the cloud-based applications or the for the cloud security, I have the AWS, that is one of the biggest name in Amazon, the Microsoft Azure, and also for some other security vendors like the ALK and the HCIA. If anyone else you have any experience in the networking, you might be aware of the Huawei and the Cisco technologies. So my experience in multiple domains in security is vulnerability assessment. So I'm going to explain every point here with a little bit of description. Like vulnerability assessment is finding the weaknesses within the application, within the networks.
The web application is to make sure that the applications, the Android applications, the websites that you surf every day are secure and so that the hackers don't hack them. The SIM operations are threat hunting. So, anything that is not being monitored is, you cannot do anything if it's not monitored. So cyber operations is about creating an umbrella over the entire infrastructure to have eyes and ears so that you can respond to any threat. The endpoint security, everyone is aware of the antivirus solutions on their mobile phones, on their laptops, and the other systems. So the network security, security audit and cloud architecture, security audit and compliance. So now that the domains you see, it's changing from the more technical towards a compliance and governance, security compliance audits, where you have the auditors, compliance and security controls, information security management system. So fortunately, I have had a chance to work in all of these, all maximum domains in the cybersecurity. Uh, so I will try to explain, answer maximum questions if from you. What is cybersecurity? I won't go into much further maximum details, but I will more focus what is the need of the today's world, because the very big difficulty is how to get into the cybersecurity. You have you have 40 students in your class, 38 to 39 people we go into the development or other fields, and only one or two people we choose the cybersecurity, because that's not a very like a known domain to most of the people. So I'll try to make everyone aware. Cybersecurity is the application of technologies, process, and controls to protect system. So the idea is actually to protect the systems and the data. That is the main thing beside everything. Because if you're developing something, you're creating data, you're creating some applications. But what is cybersecurity? We also something have the information security. What's actually the difference? So you can see the cybersecurity is more of a technical side, more of a technical controls, but the information security is the governing part which defines what data to be protected, how we can protect the data, which frameworks can we use to protect the data. So the main difference is like this. And for the information security, we have three main things: confidentiality, integrity, and availability. Like who is the authorized to access a certain data with the highest availability. Information security only tells this part, but it is now the responsibility of the cybersecurity engineer to implement all of these things, like confidentiality, using the authorized access. Availability means having some load balancers or the firewall so that every website, in a very lame words, website is always 24/7 available. If you go with the practical example, the mobile banking applications, if you're using Uber or Careem, they are available 24/7. This doesn't have to be a case where you open a mobile app and it says not responding or the service not available. So availability means. But what is the scope of cybersecurity? I'm not going to push anyone to go into the cybersecurity, but before knowing the scope of cybersecurity. So this is the market trend for the 2021 to the 2025. About 3.5 million unfilled cybersecurity jobs by the end of 2022. This was a previous data, so you can see there's a huge potential within the domain of cybersecurity. I already told you the reason. 38, like 90% go to the people development, but only 5 to 7% people go to the securing them. So a large difference. The global cybersecurity market was valued at 150 billion US dollars in the 2021. And by the 2027, it is expected to reach almost the double, the 317 billion US dollars. So these are just the expected growth, but no one can see with the introduction of the AI that the things are getting really massive in the cybersecurity in every domain. So the recent highlights how actually the world is changing. Uh, as everyone knows that in the recent about last 2 3 years ago, Amazon launched its first data center in UAE, and in the last year, in Qatar, Microsoft opened its first data center in Qatar, and also Google is going to inaugurate officially in the 22nd of this 22nd, like tomorrow to the day after tomorrow, they will be inaugurating the Google's data center. So why they are actually moving towards this region?
because they know the laws and the local regulations they have to abide by to operate in these countries. So AWS, Microsoft, and Google, they are here. It means the cloud is the future and the cybersecurity. And if you go over these products, you will come to know that like 20-25% of the technology is tilted towards the security applications they are providing, the security products they are introducing, and how secure they are managing within the region. Cybersecurity domains. All right, the word cybersecurity is very vague. If I take, okay, I work in the cybersecurity, that's not going to work. Cybersecurity has multiple subdomains. You can see the network security. If you have read the course networking, you know that how the network security works. But if you are a web developer or a mobile developer, here comes the application security. So you see these domains are like a different one. So a person cannot work in at the same time in two different domains. And also the information security, that is more of a governance or the laws and framework. So let me give you an example of the information security. In Pakistan, there's a cyber law, but that's not up to the industry level. But in if you look at the other laws like the GDPR for the Europe, if you or your company wants to do some business with the Europe, your company must be or your product must be GDPR compliant. Otherwise, you cannot do business with the Europe. The other example in Qatar or in all over the GCC, they have their local laws. So when a cloud vendor comes here, they deploy their cloud services, they make their cloud data and everything as per the laws of the local law. So for example, Microsoft here in Qatar will follow the local law. Otherwise, they cannot operate here. So the incident response. So let's suppose there is an issue or there is a threat or there is a breach. The incident response team will come here. Threat intelligence. Threat intelligence. What is a threat? Threat means a threat or risk to a certain thing. So what does that mean? You know, the hackers, the in the dark world, in the underworld, they are treated as threat actors. Everyone aware of the Russian hackers are the most wicked ones, the China hackers. So they can be considered as the threat actors. So what people in the threat intelligence do, they gather the information about everything that these threat actors are aiming at a certain region. So they spread the advisory, they spread how the threat actors are working and make other organizations aware that how they can prevent themselves from those threat actors, the governance, risk, and compliance. But to give you a broad or a more interactive view, the cybersecurity domains diagram, where you can see the different domains of the cybersecurity. A very short is the framework and standard. The NIST is one of the framework. The CORBIT is another framework. The ISO 27001, especially for the information security management system, is a framework. So what does a framework do? It tells you how to implement a managed security within an organization. That's it. User education is one of the largest thing that is a growing industry. Like if you look at the multiple certifications or anything, you can see that it's a huge potential. The security operations has now its multiple branches like security operations, vulnerability management, how we can prevent from the threat actors, how we can actually detect, how we can respond if in case of any breach. The governance, talked about the local laws and regulations, how the risk can be reduced, what comes under during the audit and how we can mitigate those risks. The risk assessment, the vulnerability scans, finding actually it's about finding the vulnerabilities. The physical security is also very important. If there's no lock to the data center, anyone can come and take the service with them. So physical security is the core. The career development, training, volunteer certifications, personal branding, if you're attending some webinars or the online certifications, it's a must to have up to date yourself with the latest trends of the cybersecurity. So here comes the security architecture. You can see security engineering, how you actually build secure things. So the in like in current trends, what happens when a thing is built, the after its completion, the organization start securing them. So that's not the right approach. So the things are actually changing from the very first day of the design. Security engineers are actually involved with the security teams, with all the relevant stakeholders to suggest
to consult to provide them suggestions on how they can actually make a very good security product. And also we have the cloud security, we have the data protection, how you can data protect your data not from the threat actors but also from your insider who is already working in the industry. Or the IT certification roadmap, here you can see we have something like the information security. If you follow this path, you can achieve the information security domain. But if you have some certifications or interest in the network and cloud technologies, you can follow this CompTIA Network Plus, CCNA, OpenStack, Red Hat, and then follow up certifications to get into the network and cybersecurity domain. Same goes with the software development. So let me show you how you can get into the software develop secure software development. By the way, you start with the basics of security, CompTIA Plus, and you do the developer associate from the AWS, and then you go over the DevSecOps engineer. It is now changed actually to the DevSecOps. So development, security, and operations engineer. Everything is combined in one place. And then finally, you go with the Microsoft certified software developer. So that's again, software word is there. It means that the software you're developing is secure. It's not like a very noob software that we develop in the universities that has no security strategies, that has no security part in it. So the industry comes with the latest trends and you have to follow the secure things. How to get into the cybersecurity? I have simplified in 5 different points. Get to know the cybersecurity industry and what jobs are on offer. Like we briefed, these are the different cybersecurity domains. It is now your responsibility to find yourself which domain you are interested in and then start educating yourself. If you are a recent college graduate, go for the software engineering, go for the cybersecurity degree, because I have heard that the Air University is now offering the bachelor's in cybersecurity. But before 4 to 5 years ago, there was no concept of the bachelor's in cybersecurity. So the fortunate thing is now a lot of bachelor certifications and the master certifications are going to be in the cybersecurity. Get certified and qualified. So after you get the bachelor's degree, that's not enough. I'm really saying that's not really enough, because a lot of people are now graduating with the degree of cybersecurity or with the interest or with the history or with the experience of cybersecurity. So to differentiate yourself from the rest of the class, you have to get certified. You have to get certifications from the renowned institutions like AWS, Microsoft, AC Council, CompTIA, OSCP, like things. Gain hands-on practical experience. This is a must, because if you don't have the practical hands-on experience, you cannot survive in the industry. One can talk in the interview, but if he doesn't have a practical hands-on experience, he will be out of the game in a few months. And also demonstrate your abilities and passion on the social media. Let me give you an example on this point. One of our colleague was working in eBricks. You That's a company in the Arfa Karim Tower, and he was so much good in his technical hands-on experience. And what he does, if he finds a solution to anything, he creates a blog over this. So how he got his job in Australia? One of the person from the EY was following his blogs and articles. So he was just 20 years. Like recently, he moved to Australia. He is just 20 years, and now he is a senior security consultant in EY in Australia. If you have something, if you can distinguish yourself from the crowd, it's a huge potential in the cybersecurity. So now comes over to the different roles and responsibility thing. So before moving to the roles and responsibilities, does anyone has a question? Or it seems too boring. By the way, I'm audible. Salam, sir, Yes, you're you're audible. completely audible. Actually, the webinar is structured the way that everyone's Okay, mic is muted. all So right. if you want to have a break for, we can ask everyone to raise their hands, or we can move that to the end. So it's Yeah. entirely up to you. Okay, we will move that to the end because it. Okay, someone has a question. Yes, go ahead.
I think someone had a question. All right, no worries. We will take the question and answer at the end of the session. Job roles and responsibilities. So now earlier we had the different domains of the cybersecurity, but every domain is linked to the different roles and responsibility. Like I am a information security specialist here, but before that I was working in the security engineering role. So what are the different roles and responsibilities in industry? These are just the sample roles. You can go over the LinkedIn, you can go over any uh, job portfolio profile portal where you can find a multiple roles like the security engineer and architect, cloud security engineers. Now it's a totally different domain, penetration tester and ethical hackers, security analysts and specialists, security consultants, security auditors, and also the CISOs. They are the ones who are formulating the policies related to an organization. And like he is, you can say, the head of the information security department. Responsibility. So these are some of the sample of what are the responsibilities of a penetration tester, also known as they are known as the ethical hackers. So they have a very good information about the network. They are very good in finding the vulnerabilities. They are very good in application understanding how the application works, building penetration testing tools and code review for security gaps. So these are just the sample or job description of a penetration tester. But what comes under the plan of the security engineer? So security engineer has actually to protect the organization or the infrastructure from the external threats or internal threats. Security engineer plans security measures to prevent an organization from cyber attacks. So you see, it's a more of a very generic role. You assign anything to security engineer and expect an outcome. You cannot say that security engineer cannot do anything. He's like a one-man army. He can do anything. They protect an organization's network and data, planning and implementing the security measures. What measures? The controls, the technical controls. Design and review the security architectures. If you are creating some application, like application plan, if you're drafting some network diagram, network architecture, they will be the one who will assist in designing and reviewing the network then. The malware analyst. So who's the malware analyst? Who captures the malware, analyzes them, and categorizes them. Either they are the malicious ones, either they are benign ones, and also gives the target, the audience, the recommendations how to handle that malware. uh, to document the methods to avoid malware threats, research and develop malware protection tool. So basically research and development comes under the umbrella of security vendors. ESET, McAfee, Norton, Bitdefender, Kaspersky, Microsoft Defender. So they do the research and development and create the protection tools. And also for the threat research, already told you, they are the persons who find of very evil persons over the internet, gain a lot of information about them, gain a lot of information about what they do, how they do, and what is their target, and tells the world, okay, this is a APT threat actor from China who is targeting Pakistan. What Pakistan? He's targeting what institutions of Pakistan? He is targeting the government institutions of Pakistan. So this type of information comes after the threat research. Cyber security engineer role. So that's a fancy type of slide. Network. He has his expertise in network security. He has the capacity to educate the users. He also is a person who can defend the malwares. He can create a policies on the removable media. He can do secure configuration of the firewall and on the end systems. Further, using the in identity and access management, he is the one who defines the policies and grant very granular secure permissions to the end users. Like if you have a portal uh, on your GCU, you can see the results on the portal, but you cannot see the result of another person or another student. That is due you have a very secure granular user permissions. The incident management, in case of any incident, he's the one supporting and leading the things, monitoring. Everything needs to be monitored. Home and mobile working secure. Skills and qualification. So what are the essential skills and qualifications? First one is the technical skills.
networking, programming, operating system information, analytic and programming, problem solving, strong communication, knowledge of cybersecurity. Above all, there's one required skill that is not listed here. That is the keen and passion to learn every day new thing, implement it, and the very next day you have the same passion to learn about new things, because cybersecurity is one of the domains where on the daily basis there's something new. You cannot say, okay, now I'm done with the bachelor's in cybersecurity, I have the certification, now I'm done. No, no, that's not the case in cybersecurity. Every day you have to spend about minimum 30 to 40 minutes to know what is actually happening in the world, what's the latest trending things, how you can cope up with the latest security threats, and what are the best latest recommendations you can apply in your organization. Education and certifications, typically for the entry role, you have to have a bachelor's degree in a related field. So I'm not going to say software engineering or uh, computer science, but I'm saying the related fields. So what are the related fields, like the electrical engineering, software engineering, IT, networking, something like that. Good to have a college degree, but the most important thing, you must have the passion for the self education. So not no one's going to pamper you, okay, here's a webinar, just come. You have to google it, find every possible webinar, either on YouTube, either it's a free, or either if you have to pay it. Explore online educational platforms. Now there are a lot of educational platforms like the EC Council I've already mentioned, and you can find yourself. YouTube is one of the best platforms. Certification, so this is just a sample. I have listed here some of the security certifications from the CompTIA. CompTIA is also giving a detailed skill set, a detailed course, a detailed webinar, a detailed of everything what is required to get into the cybersecurity. Like if you go with the CompTIA Plus or the CompTIA network, you will learn about the networking, you will learn about the network security, you will learn about the firewalls. If you go with the Comptia Cloud, you will find about something about the cloud, the basics of the cloud, the how the cloud works, and also how you can deploy the secure applications on the cloud, and a lot of things. So for the training and certification, here are some other certification and the roadmap. You can see the cybersecurity has CompTIA Security Plus, CSSP, IT basis. You can get it from the CompTIA fundamentals. For the clouds, you can get Microsoft Azure. For the penetration testing, you can see CEH, OSCP, and OSEE. These are just the reference link to the Microsoft Azure, AWS security, and bootcamp and virtual labs. Here are the boot or the virtual labs like the try hack me hack the boss. Just sign up on these platforms and you will find a lot of virtual simulated platform. You can train yourself on the simulated environments instead of targeting the real life web servers or the applications. You can find the vulnerable web applications, web servers there, and you can practice on them. Finally, demonstrate what you have learned, showcase on the social media so that everyone knows that he is actually a cybersecurity engineer. So what is outcome of showcase yourself? For me, this is my almost third or fourth job, but I have never applied to any job. You know, the reason is that when you build your profile upon your upon your professional experience, upon your connections, and upon what you post to the social media, there are recruiters in the from the companies who see who is a very good person who suits them, and then they automatically hunt them. So this is my fourth job, and I haven't applied and to our recruiters. Every time I was hunted by the recruiters. Career paths and opportunities. So here are different career paths that we already mentioned. We have careers in the security operations center, incident response teams, penetration testing, security consulting. Government and defense agencies have their own criteria of the security research and development. Industry trends and challenges. With the evolvement of the AI, IoT, cloud computing, don't limit yourself to the very basics. Pull yourself to the highest. Whatever you can do within a period of 6 months, you can achieve a lot of things in the cybersecurity, like learning the AI in cybersecurity, learning the IoT cybersecurity, learning the security in cloud computing.
if you see something in your organization, like there are CCTV cameras, you can see how they are secure, how we can hack them. Here comes the IoT security part, the cyber threat and attacks. If you have or your friends faced a threat from the ransomware or from malware, instead of giving them a simple solution like, okay, format the system, install the new OS, put yourself in a curious situation that how you can actually reverse the situation. How can you beat that ransomware? How can you get the data by using the data discovery tools? How can you put control so that so that this type of attacks won't harm you in the future? And just before concluding, is cybersecurity right for you? Because my motive was to put everyone in these shoes. Are you right for the cybersecurity, software engineering? Are you a computer scientist, or are you from a management background? If I don't know what background of the students are, the colleagues are here. If you are from the management background, you can also go into the cybersecurity. Like which domains? Security management and leadership. How can you actually get into? By doing some certifications like CISM, CSSP, by reading the frameworks, corporate ISO 27001. Even the management students still have a gap to enter into the domain of cybersecurity. And before, so that's the end of the slides. I think I didn't went very fast. So any questions and answers? I'm not asking any questions, but I am expecting questions. If anyone has any questions, you guys can raise your hand. Your mic will be enabled. Just to clarify once again, anyone who has a question may kindly raise their hands. We'll make them presenters so they can unmute their mic. Sir, I would like to start off. Mhm. आपने बात की कि you have moved from 3 different jobs, or they may seem like just a change in title, लेकिन they are a change in responsibilities as well. So can you walk us through कि all these jobs, what has changed, and what is your day-to-day life look like in each job? All right, so I will start my first job. वहाँ पर कुछ ऐसा था कि I was only responsible for the penetration testing of the applications जो कि वहाँ पे in-house software house के अंदर develop हो रही थी. And after that कुछ I worked on that domain for about 6 months और फिर कुछ और responsibilities add हुई कि जो पूरे organizations का infrastructure है उसको monitor कैसे करना है. So let's suppose अगर कोई ransomware आ जाता है, कोई external threat है, हमें नहीं पता until and unless we have some eyes and ears on our infrastructure. So I started working on the security operations side. What happens? मैंने अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर एक सिम सॉल्यूशन डिप्लॉय किया, जो हमारी एंड पॉइंट प्रोटेक्शन थी उसके ऊपर काम किया, और एट द एंड ऑफ दिस आफ्टर द एंड ऑफ अबाउट अ ईयर कहीं पर भी हमारे किसी सिस्टम के ऊपर कोई यूज़र भी क्रिएट होता था, कोई फाइल भी क्रिएट होती थी, कोई मेलवेयर भी आता था, तो इंस्टेंटली एक अलार्म जनरेट हो जाता था और हमने उस सिस्टम को कंटेन करना होता था, आइसोलेट करना था, तो विद जस्ट सिंगल मिनट्स हम उसको हैंडल कर लेते थे। अगर नेटवर्क के ऊपर कोई स्कैनिंग कर रहा होता था तो वो हमें फ़ौरन से अलार्म जनरेट हो जाता था कि नाउ वी हैव सम इंट्रूडर और अ पर्सन विद मैलिशियस इंटेंट जिसको ब्लॉक करना कंपल्सरी है। अब यहाँ तक तो हम कर लेते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि वो नेटवर्क में आया कैसे, इसके ऊपर हम थ्रेट हंटिंग और फोरेंसिक्स करते थे। फोरेंसिक वगैरह करते थे एंड देन उस रूट कॉज़ कि किस लूप होल की वजह से वो हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर हुआ, उस लूप होल को पैच करते थे। इस तरह का आई स्टार्टेड फॉर माय फर्स्ट 2 टू 3 जॉब्स एंड देन इन अनदर जॉब क्लाउड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम था इन एडो। तो क्लाउड के ऊपर जो क्लाइंट्स थे उनका हम पूरा नया आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते थे। सो मैं जो डेवऑप्स इंजीनियर्स थे उनके साथ बैठता था, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स थे, सो इट वाज़ अ टीम ऑफ 3 पर्सन्स। मैं उनको सपोर्ट करता था कि जब वो लेट्स सपोज़ उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट कर लिया अपने एक क्लाइंट के लिए, देन वी रियलाइज़ कि यहाँ पे तो फायरवॉल प्रॉपर जगह पर लगी ही नहीं हुई। फायरवॉल हमें पैरेलल के अंदर सीरीज़ के अंदर लगानी पड़नी है, फर्स्ट पेरीमीटर फायरवॉल, देन इसके बाद हमारी इंग्रेस फायरवॉल लगानी है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स इम्प्रूव। फिर डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि डाटा आप किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। एंड देन हमने क्लाउड के ऊपर रियलाइज़ किया कि देयर आर वेरी
easy ways to implement the data security by encrypting everything. फिर क्लाउड के ऊपर इसी तरह वन बाय वन लर्निंग होती गई। आप जब मैं इस करंट पोजीशन के ऊपर हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, तो यू कैन से आई एम द ओनली वन हु इज लुकिंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स एंड मैनेजिंग 90% ऑफ द सिक्योरिटी। तो दैट्स ऑफ द थिंग्स इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं यहाँ से कल किसी और जगह पे जाता हूँ, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी, तो आप आराम आराम से उसको अडॉप्ट भी करते हैं, अडेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और फिर उसके बारे में लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज जब आपको बेसिक सिक्योरिटी की अच्छी सी पता होगी, तो आप कहीं पर भी इजीली फिट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इतने डिटेल आंसर के लिए। वन मोर क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम माय साइड, वो कि ये होगा कि आपने कहा कि आपने हर जॉब जो है वो without reaching out to anyone, without applying anywhere, recruiters reached you out yourself. So, what platform did you use? Was it entirely LinkedIn, or were you a regular poster? किस तरह से आपने अपना सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर रखा जिसकी वजह से आपको इस तरह से आउटरीच मिले? अच्छा, इसको हम दो फेज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक हम लोकल कर लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, और एक हम इंटरनेशनल कर लेते हैं, और फिर हम इसको जियोग्राफिक रीजन्स के ऊपर भी मैप करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि इंडीड है, rosie.pk, आप इनके ऊपर अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, प्लस लिंक्डइन। लिंक्डइन तो खैर यूनिवर्सल है ना, कहीं पर भी लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफाइल बनाना कंपलसरी नहीं है कि आपने पिक्चर लगा दी और कर दिया कि दिस। प्रोफाइल के ऊपर आप हर चीज डिटेल में लिखनी है। आपने इस तरह से कंसीडर करना है कि आपको एक सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, तो आप किसी की प्रोफाइल पे जाएं तो वहां पे क्या लिखा हो, ये ना लिखा हो कि एबीसी ना, नेम एबीसी, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एट दिस, दैट्स इट। आप उसको पूरी डिटेल बताएं कि आपने किया क्या भाई। वो आपका वो इंस्टाग्राम या उस टिकटॉक थोड़ी है वहां पे जो उन्होंने आके आपका नाम देखना है या पिक्चर देखनी है। सब डिटेल उधर होनी चाहिए कि आप क्या करते रहे, कि ताकि रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट कर ले। आप गल्फ के अंदर आ जाए तो गल्फ के अंदर बैथ है, इट्स अ वेरी गुड पोर्टल। बैथ के ऊपर प्रोफाइल बनाए। नौकरी गल्फ है, इंडीड आल्सो वर्क्स हियर। यूरोप साइड पे चले जाएं तो लिंक्डइन वहाँ पे भी काम करती है, यूरोप के कुछ अपने प्रोफाइल्स हैं। फिर लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं, पिंक कैमल है, हेलियन है। सो जब आप आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको समझ लें कि 6 माह यही सीखने में लग जाते हैं कि एक्चुअली आपने इंटरव्यू तक लैंड कैसे करना है। जब एक दफा इंटरव्यू पे लैंड करके फिर तो आपकी अपनी स्किल है। उससे पहले ये स्किल बड़ी कंपलसरी है कि हाउ टू डिस्टिंग योरसेल्फ एंड गेट इनटू द राइट प्लेस। ये कुछ मैंने प्लेटफॉर्म्स के नाम दे दिए, बाकी आप खुद भी जब देखेंगे लिंक्डइन के ऊपर लोगों ने कुछ अपने थर्ड पार्टी लिंक्स दिए होंगे, आप उधर भी रजिस्टर करें। सिक्योरिटी आई थिंक यूके के लिए एक बड़ी अच्छी है, सिक्योरिटी वेंडर का के नाम के कुछ उनका नाम है, तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। बस लिंक्डइन यू कैन नॉट, यू शुड नॉट मिस लिंक्डइन। Got it, sir. Thank you so much. बाकी एडिशनली किसी का कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद इब्राहिम raised his hand. Kindly unmute his mic. कौन है इसका Mic has माइक, कौन है इसका मोहम्मद इब्राहिम का माइक अनम्यूट करेंगे? his Mohammed mic. Ibrahim, your mic has been enabled. You can ask your question. इब्राहिम आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरा नाम अजहरुद्दीन है। मैं ये पूछ रहा था कि सर क्वांटम कंप्यूटर की वजह से ये मैं एक दो डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, उसमें कह रहा था कि इंक्रिप्शन को बहुत प्रॉब्लम फेस आ रही है, और वर्ल्ड इस चीज़ पे कोशिश कर रही है कि नए तरीके इंक्रिप्शन के ढूंढ लिया जाए, जिसकी वजह से 4 एल्गोरिथम को अभी तक सेलेक्ट किए गए। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा, या फिर जिस पे काम होने जा रहा है, तो इस पे आज तक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्रिएट किए गए हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस आ सकते हैं? अच्छा, ये तो एक तो समझ लें कि बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं। एक मैं वीडियो रेफर करूंगा आपको वेरिटेसियम की, शायद आप उसी को लिंक करें कि किसी और चीज़ को। वेरिटेसियम इज
चैनल ऑन यूट्यूब, उसने भी इसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो किया कि हाउ द क्वांटम कंप्यूटिंग विल एक्चुअली ब्रेक नॉट एवरीथिंग, स्पेशली इंक्रिप्शन इन द वर्ल्ड। होगा क्या कि जो अभी हमने एल्गोरिथम जनरेट किए बड़े लिमिटेशंस के साथ जनरेट किए हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स उनको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे उनको क्रैक कर देगा। लेकिन उसको तोड़ के लिए भी ही टोल्ड कि अच्छा उसको हम किस तरह से हम सिक्योर एल्गोरिदम्स बना सकते हैं। तो जब क्वांटम कंप्यूटर ही सिक्योर एल्गोरिदम बनाएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द क्वांटम कंप्यूटर टू ब्रेक इट। और साइंटिस्ट इसके ऊपर आई बिलीव नासा के कुछ साइंटिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं सिक्योर एल्गोरिदम डिजाइन करने के ऊपर। सो ये वाली जो गेम है ये चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं। और भी यहाँ से कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया था। जी। अस्सलाम सर। मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये है, सलाम। क्या एआई भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को भी रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती है? अगर कर सकती है तो किस सेंस में कर सकती है? और जो हम्म, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, अगर इतने सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए कि इससे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जरूरत ही ना पड़े, आपका इसके बारे में क्या? ठीक है। दूसरी चीज के ऊपर मैं पहले आता हूँ कि ब्लॉकचेन सिक्योर चीज नहीं बनाती है। ये चीज आप देख लें, ब्लॉकचेन चीजें बनाती है सिर्फ, एक उसकी एप्लीकेशंस है। चीजें किसने डेवलप करनी है? वो ह्यूमंस ने डेवलप करनी है। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो ह्यूमंस डेवलप करेंगे। तो बेशक वो ब्लॉकचेन के ऊपर बनाए, वो बेशक आप आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बनाए, वेब 2.0 के ऊपर बनाए, वेब 3.0 के ऊपर। अगर आपने उसके ऊपर कोड खराब लिखा हुआ है, मेरे जैसा गंदा मंदा कोड लिखा हुआ, तो वो वल्नरेबल ही होगा। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दिया मैंने आपको। अब एआई की आपने बात की, दो पर्सपेक्टिव है एआई के अंदर के। एआई एक तो सपोर्ट करती है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को। आप अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी को पायलट अगर देखें, तो जो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर 3 घंटे के अंदर काम करता है ना, वो उस सिक्योरिटी को पायलट मीन्स असिस्टेंट, वो उस असिस्ट को पायलट को यूज करते हुए विद इन 30 मिनट्स वो पूरे का पूरा काम कर लेगा। फर्स्ट, असिस्ट करेगी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को। सेकंड, डेफिनेटली वर्ल्ड इफ द पीपल सेज कि एआई रिप्लेस नहीं करेगी, तो शायद उनकी गलत फहमी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि इंटेल ने 7,000 के करीब एम्प्लॉयज को हायर ही नहीं किया। कुछ और कंपनीज भी हैं, टेस्ला, उन्होंने अपनी पोजीशंस कम कर दी हैं। रीजन दे सेट के ये काम वो एआई से ले लेंगे। दोनों पर्सपेक्टिव चले मार्केट के अंदर। लेकिन डोंट लिमिट योरसेल्फ कि एआई आ गई तो हम किधर जाएंगे। हर चीज जो नहीं आती है ना, शुरू में उसका बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आए तो यू विल नो कि एआई की कुछ अपनी लिमिटेशंस होंगी जिनको ओवरकम करने के लिए ह्यूमंस फिर भी रहेंगे। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को सपोर्ट करता हूँ कि सपोर्टिव भी है और ह्यूमंस को रिप्लेस भी करेगी। जी, इब्राहिम, अब आपका क्वेश्चन। जी इब्राहिम, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर लें। BSCS 20 आप क्वेश्चन कर लें। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, what are the steps should I take if I become the victim of cyber attack? अच्छा, साइबर अटैक किधर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, इस तरह की चीजें जब सिक्योरिटी में आती है ना, आपको प्लानिंग फेज होता है कहीं पे भी। कहाँ पर अटैक हुआ आपके, आपने मुझे नहीं बताया। मोबाइल पे हुआ है, सिस्टम पे हुआ है, आपके ऊपर हो गया साइबर अटैक, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी पे हो गया, तो स्कोप मुझे नहीं पता। जब आप कहीं पे भी आप स्कोप डिफाइन नहीं करते ना, इवन आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी देखें, तो आपने सबसे पहले एक समरी, एक एग्जीक्यूटिव समरी देते हैं जिसके अंदर आप बताते हैं कि हमने क्या करना है, और एक थीसिस स्टेटमेंट होती है। आप वो डिफाइन नहीं करेंगे तो कहीं पे भी नहीं जा सकते। सो यू हैव टू वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर। सो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपकी इस तरह से कोट कर लेता हूँ कि साइबर अटैक हुआ आपके सिस्टम के ऊपर। आप सिस्टम के ऊपर किस टाइप का साइबर अटैक हुआ? डीडोस अटैक हुआ, आपका सिस्टम काम करना छोड़ गया है, कोई रैंसमवेयर आ गया, चलें डीडोस आगे काम करना छोड़ गया, आप नेटवर्क चेंज करे, फायरवॉल लगाए, रिजॉल्व हो गया। सेकंड केस के ऊपर आ जाते हैं, आपके लैपटॉप के अंदर मैलवेयर आ गया, तो क्या करें? अब यहाँ पे भी दो तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट, कि आपने प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए होने चाहिए थे, क्या कि अपने सिस्टम का डाटा बैकअप कहीं ना कहीं रखा होना चाहिए था।
ये तो आपने करना ही करना था। कहीं क्लाउड पे रख लिया, किसी यूएसबी के अंदर डाटा रख लिया, ताकि कोई रैंसमवेयर आए, आपका डाटा इनक्रिप्ट हो जाए, तो आप उस डाटा को दोबारा से अपने सिस्टम के अंदर लेके आ सकें। लेकिन कुछ भी नहीं रखा तो क्या होगा? यू विल वेट अंटिल उस रैंसमवेयर का कोई सोल्यूशन निकल आए, प्लस आप उस रैंसमवेयर को थ्रू डिफरेंट मेलवेयर, एंटी मेलवेयर सॉल्यूशंस उसको सिस्टम से रिमूव करेंगे, और जो भी इसके फोरेंसिक्स के अंदर आएंगे आउटकम्स, यू विल डील विद देम। थैंक यू सर। जीएसएन। Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairat hai, sir. So nice of you. I am Mohammad Hassan Siddiqui from India, sir. Thank you so much for giving you a valuable platform to share some thoughts. सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने पिछला भी सेशन जो है सेम जो है व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किया था। आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है, अगर एक वीडियो मेरी जो है इनेबल कर दे तो मैं आपको शक्ल दिखा सकूँ आपने, तो इट जी विल जी जी, बी बिल्कुल ग्रेट इंटरेक्शन between जी us, sir, बिल्कुल। and among team. टीम अगर वीडियो इनकी इनेबल करते हैं मोहम्मद हसन की, बल्कि सबकी इनेबल करते हैं, जिसने भी इनेबल करनी हो वो खुद से कर ले। जी, आई होप अब आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत बहुत जी जी जज़ाकल्ला सर, क्योंकि एक ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए जो है आपसे इस्तिफ़ादा हासिल हो जाता है और इंटरेक्शन भी हो जाता है। तो सर बहुत बहुत अच्छा था, फ्रूटफुल सेशन था, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आइंदा आने वाले सेशंस भी अच्छे होंगे। मैंने प्रीवियसली भी इसी ग्रुप से ज्वाइन किया था। चूँकि जो है कॉमन कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं, तो लिंक्डइन पे या अदर चीज़ों पे देखते हैं, तो फिर भी ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। जज़ाकल्लाह सर। सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था, असल में मैं पीएचडी कर रहा हूँ राइट नाउ रिसाइडिंग इन चंडीगढ़, स्पेशली बिलोंग टू लखनऊ। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और चंडीगढ़ में पीएचडी चल रही है एंड डूइंग जॉब परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह इन हैदराबाद, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे पहले कुछ साल जो है जामिया, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा तवील हो जाएगा, एक नो दो नो मिनट नो का, नो, दैट्स इजी, क्योंकि टाइम नहीं इसके आप अलावा आराम कोई से। मौका नहीं मिलेगा। हमारे और भी साथी जुड़े होंगे, तो उनसे भी गुजारिश है थोड़ा हमारे लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए और जो है आपस में जो है मोहब्बतें अता फरमाए। तो जो ट्रैफिक एनोमली डिटेक्शन है, असल में एनोमली डिटेक्शन में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में तो एक तो नेटवर्क ट्रैफिक आता है, फिर व्हेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंसर्स, तो सेंसर में जो है इंडिविजुअल वैल्यूज भी आती हैं, जैसे 23 डिग्री टेम्परेचर हुआ, 24 डिग्री टेम्परेचर हुआ, लाइक दैट। तो सर जो है क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक जो हमारा आ रहा है उसमें जो है ये इंडिविजुअल्स वैल्यूज जो है एम्पलीट्यूड वगैरह जो टेम्परेचर का उसको अलग करके और ट्रैफिक को अलग करके देखा जा सकता हो? इस पे सर मजीद अगर कुछ रोशनी मिल जाए। जी जी जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन मोहम्मद हसन भाई। बल्कि आपको मैं रेफर करता हूँ, ये चीज़ें डेफिनेटली सेपरेट हो सकती हैं। आप इस टूल का आपको बताता हूँ, एक डार्क ट्रेस है, ये भी क्या करता है, ये भी सेम बिहेवियर के ऊपर ही काम करता है। इट उसके अपने मॉडल्स हैं, अपनी एआई है, प्लस वो अपने जो पैटर्न्स और वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करता है, और वो एनालाइज करता है कि ठीक है, ये पैटर्न ने लास्ट टाइम तो ये वाला कनेक्शन नहीं बनाया था, लेकिन अब इसके ऊपर ये वैल्यू आ रही है, तो ओके देयर इज सम एनोमली। आप डार्क ट्रेस को थोड़ा सा देखें। अब ये ट्रैफिक जाती कैसे है? स्पैन पोर्ट के ऊपर टोटली अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक जब वो मिरर करते हैं, और वहां से जब आप सारा डाटा लेंगे, तो आप पूरा पूरा पैकेट रीड कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप अपना क्या कहते हैं, वहां से डाटा फेच करें यूजिंग सम डिफरेंट रूल्स, नॉट रूल्स, या कोई भी यारा लगा लें एक्सफिल्ट्रेटर के लिए, तो आप वहां से डाटा फेच कर सकते हैं। स्पैन पोर्ट के ऊपर ये काम करते हैं, हम यहाँ पर कर भी रहे हैं कि डार्क ट्रेस वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है, एक्सेप्ट डार्क ट्रेस जो वो एआई और दूसरी चीजों के ऊपर भी कर रहा है, लेकिन मोर और लेस उसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी सेम है। ओके फाइन सर। सर दूसरी एक चीज़ ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी राइट नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग अवर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर थ्रू द एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल, तो एमक्यूटीटी या सीओएपी प्रोटोकॉल है, तो उस तरह का जो है अगर हम अटैक अपनी डिवाइस या लैपटॉप या किसी से लॉन्च करने के लिए फॉर द एक्सपेरिमेंटिंग पर्पस, तो क्या इस तरह का कोई टूल मौजूद है जिसपे हम सारे जो है प्रोटोकॉल्स को या एमक्यूटीटी को इस तरह की उसे लॉन्च करके और देख सकते हैं फॉर द रिसर्च पर्पस?
हाँ, रिसर्च पर्पज के लिए भी रिसेंटली आपने डिटेक्शन भी करनी है, अटैक तो आप क्रिएट कर सकते हैं। काली लिनक्स के अंदर बड़े ज्यादा टूल्स हैं, एंड में आपके अंदर भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। अब उनके डिटेक्शन के लिए अब इन्होंने काली के साथ निकाली है पर्पल लिनक्स। पर्पल के अंदर आप उस चीज को पूरे का पूरा किस्म का मिनी सिम रनर रखा हुआ, आप उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। लॉन्च करें ओके काली के अंदर मल्टीपल टूल्स, एलटीटीपी टैग्स, इनम फॉर लिनक्स। नेसिस के अंदर भी बाय डिफॉल्ट उनके स्क्रिप्ट्स हैं, दे कैन क्रिएट द सिमिलर अटैक। फिर आई के ई स्कैन है, इट कैन डू द सेम। तो आप इस तरह के टूल्स जनरेट करें, डिटेक्शन के ऊपर आप सिम वगैरह या डिटेक्शन अपना पार्ट लगा सकते हैं। यू कैन फाइंड एवरीथिंग। okay sir, thank you so much for giving your valuable support and guidance sir. I hope inshallah it will be continue in future sir. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Thank you so much. और क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस जितने ज्यादा आपके होंगे उतना ज्यादा फायदा है ये। हेजिटेट ना करें, आप पूछेंगे तो फिर आपकी झिझक खुलेगी। जी इब्राहिम, देखें इब्राहिम कितने अच्छे हैं, वो चौथी पांचवी दफा भी हिम्मत कर रहे हैं। इब्राहिम के साथ क्या इशू है वैसे? इब्राहिम आप अनम्यूट करें इसको। He is unmuted. I believe कि उनकी साइड से कोई इशू आ रहा है. Could you leave the meeting and rejoin, Ibrahim? Meanwhile, if anyone has any more questions, kindly please raise your hands. I believe this is about it for today. I think. राइट, अगर किसी का Uh, बाद में भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, मुझे ईमेल कर सकता है किसी भी तरह से। okay, जी Ibrahim. Okay, if you can. जी इब्राहिम, अब अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी बोलें इब्राहिम। इब्राहिम, अब आपको प्रेजेंटर बना दिया, इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से एडमिन बनाना ही रह गया। आपके शायद माइक का मसला, माइक निकाल दें अगर आप माइक यूज कर रहे हैं तो। ओके, नो वरीज, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा इब्राहिम। की आवाज नहीं आ रही। किसी और का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ना हो, किसी ने कोई वैसे बात करनी हो तो कोई वैसे भी बात कर सकता है। जी जी, सर 660। जी ये जो स्लाइड्स हैं अगर ये पॉसिबल है हमें मिल सकती हैं तो ये ग्रुप में सेंड करना, तो मैं पहले अ, मैं ये साहिल से बात कर लूंगा इसके बारे में। साहिल के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। Okay, sir. आप मुझे शेयर कर दीजिएगा. I'll then share. जी जी, 666। सर आपसे गुजारिश है जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है अगर वो ग्रुप पे जिससे इनविटेशन आया था अगर उस पर मिल जाएगा तो इट विल बी इजी फॉर अस
to follow all the things. Sure, I'll try कि मैं share करता हूँ. Jazakallah sir. Sir, I believe that is it for today. On behalf of GCU-ACM Student Chapter, GCU University Lahore, Department of Computer Science, आपका बहुत thank you for taking the time out to attend this webinar, for enlightening us with this amazing talk. आज मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ पता चला, बहुत डेप्थ में पता चला, and I believe all the participants also understood a lot as well. और thank you so Thank you. much once again. Thank you. Looking Thank you. forward to बड़ा have अच्छा लग. Thank you so much. बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप खुद भी रावी हो और बाकी सारे आपके सामने रावियंस बैठे हो तो nice to have. Okay, sir. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.